So hello students, so welcome to OTS. So today morning we had, in fact the early morning we had a paper discussion at our school project, right? So regarding the performance of the candidates, right? So I wanted to share after this complete, discussion of the paper, right? So of course, how exactly was the paper in short, as well as the most common query that your score is this and this. Are you safe enough, right? uh, it's very difficult to predict the exact cutoff because nobody is so precise that we can just have an idea that yes, this can be the possible safe score. अगर आपके इसके आसपास हैं, इससे बियॉन्ड है, इससे थोड़े एक दो मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप डेफिनेटली श्योर है वो हम ज़रा गेस करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ कैंडिडेट. ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा सैम्पल साइज होते हैं उतने बेटर होते हैं. सो दैट कैन बी जिसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स, डेल्टा एल बाय एल, उस टाइप की चीज़ें. एनीवेज, so coming to the first, the English section, yes, considering the the total candidates and the average number of candidates which come from the rural background, maybe they are not so well versed in English as well, right? So there were some, of course, vocab as well as idiom phrases type of things, uh, which could have been difficult for them, right? There are two angles of any discussion. From mentor's perspective, the second one is candidate's perspective. So candidates के हिसाब से देखना होता है, because mentor को तो पेपर देना नहीं है. And when you are on the other side of the arena, you always feel that it was comparatively easier, it was doable or something. But yes, we have to add that another factor, that is exam temperament, जिसको आप कहते हैं ना कि you have to write the exam, sometimes you are nervous, right? So natural है. Whoever is serious is always nervous before the paper. Everybody wants to score as much as possible, but it is not usually as you think. Sometimes it happens, right? So I personally feel that even English was moderate. It's not easy, you can say that. The paper used to be conducted in 15, 16, 2015, 16, 17. The level has little bit changed as well, right? The expectation as well as candidates nowadays are more knowledgeable. They have good knowledge. They are well prepared. Reason maybe the hard work, the time they put up, as well as the number of resources available. Ask it me, it's more or less open learning, you can say. Candidates learn from n number of factors, and the English score actually depends upon the background as well. Nobody can make you trained enough within 1 month, 2 month, 3 month, 4 month. English score actually depends on whatever you have learned throughout your school phase as well, for the last 7 8 years or something. Some candidates, when they come out of the exam, they said that yes, they got some word from the newspaper which they used to study. So n number of factors are there, right? So English was moderate. Of course the score may vary. There are some candidates who got around 42 43 correct, but of course there are some others from the same batch who are getting approximately 28 correct, 29 correct, right? So this variation always are always there. That depends candidates perspective as such. Next is the GS section. I was talking about the NDA, right? So the important thing what I observed in the GS section was, when I say GS, that means all those physics, chemistry, geography as well. If I talk about physics, chemistry and bio, that is general science, I feel that at least 40% of the questions were typically taken from the previous year UPSC. I don't say that previous year NDA. Of course, there were some from previous year NDA as well. But previous year UPSC means the papers which has been conducted by CDS as well as CAPF, because they also have this general science section. कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे जो कि वहाँ से उठाए गए थे, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट. फिजिक्स सेक्शन में यू कैन फाइंड इवन सम क्वेश्चंस वन स्टेप न्यूमेरिकल विच एनी इवन क्लास 10 स्टूडेंट कुड हैव डन. बट देयर वर सम क्वेश्चंस जहाँ पे कि लॉजिक है, कुछ जल्दीबाजी में भी गलती कर सकते हैं आप, ऐसे भी थे, राइट. ओवरऑल इट वाज नॉट टफ. इवन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्लेम दैट येस इट वाज स्कोरिंग. दे कुड हैव डन दैट विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज. मतलब उसके लिए आपको कोई जेई की तैयारी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी. दैट कुड हैव बिन डन ईजिली वाइल यूजिंग पेन एंड शॉर्ट नोट, यू कैन से. कोई बहुत लेंदी इस टाइप का क्वेश्चन होता नहीं. एक दो सॉलिनॉइड के क्वेश्चन आ गए, वो भी आप कहेंगे कि 12th में ऐसा नहीं है. इवन द सॉलिनॉइड इज डिस्कस्ड इन सम ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th एज वेल. वो आपको पता होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, राइट. Next is coming to the current affairs sections, right. So current affair was majorly taken from the June month of 2022. That means you can say approximately 3 days back. उसमें से 5 या 6 आए थे जो जून के ही थे. So that would have been scoring for those who have done.
So we have distributed the monthly current affairs in our school projects as well. So that's why they have been able to do that, because we didn't rely on last time this last month or last days for this current affair this time, right? So we were that of time actually. The third one, coming to that, the other section, and the best was geography. The beautiful thing was that it emphasized upon physical geography, and physical geography is actually logical. सो दैट्स साइंटिफिक टाइप ऑफ होता है ना, साइंस टाइप की। इसमें बहुत क्रैम नहीं करना पड़ता, अगर आप समझते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छा करते हैं। एंड दैट्स वाई दोज हु हैव प्रिपेयर्ड दैट NCERT's 11th फिजिकल ज्योग्राफी हैड एन एज, वी हैड प्रैक्टिस्ड इनफ। सो हिस्ट्री इज ऑलवेज बीन ए बॉटल नेक फॉर मैनी कैंडिडेट्स। जितना भी आप पढ़ लो, थोड़ी बहुत तो चीज़ें रह ही जाती हैं। कुछ फैक्ट्स आपको स्कूल टाइम से भी याद होते हैं, सिंगापुर वाला क्वेश्चन था, राइट। सो ओवरऑल इट वाज मॉडरेट लेवल। आज की डेट की बात करें, आज की डेट मतलब आज जो कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसको 14-15 से आसान पेपर बोल दूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस यू हैव डन वेल, आई फील सो। even those who will watch the video will say that yes, GS paper was doable, it was scoring as such, right? So coming to the mathematics, I already discussed, of course जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है ना, वो मैथ्स पेपर में था। कैंडिडेट एक क्वेश्चन उठाता है, उसके 2-3 पार्ट्स हैं, तो समटाइम्स दे फील इट डिफिकल्ट, बिकॉज द हैबिट जो होती है वो एक क्वेश्चन की होती है। बट इफ़ यू आर लर्निंग इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, यू कैन से दैट, या आपने पेशेंस है, आप एनालिटिकल क्वेश्चन, या आप मान लो जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, सो यू वुड हैव ऑब्वियसली डन गुड, राइट। सो ऑफ कोर्स अगेन इट वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट्स टेम्परामेंट, कि आपने किस लेवल पे कर रखा है। क्या आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन देखा, फार्मूला लगाया, या फिर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी, या कह लो कि आप क्वेश्चन के हिसाब से प्ले करते हो। So that's the factor, right? So some sections were literally easy, like vector coordinate, that very easy. 3D के भी questions आप देख लो, ट्रिगो this time was more or less easy। कुछ अलजेब्रा के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन से कि कौन कौन से लाइन पे रियल वैल्यूज़ जो है सो होंगी, इस टाइप से। सो दैट वेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन से। तो इट्स ऑल अबाउट पिक एंड चूज़। एक्यूरेसी होल्ड्स द की, आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया और आप उसके बारे में एक्यूरेट है, यू आर श्योर दैट यू विल बी डूइंग इट करेक्टली, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाती है। सो दैट्स द मेजर फैक्टर। यही चीज़ होती है एग्जाम इन UPSC, टेम्परामेंट मैटर्स if you want to score well and good. I'm not talking about the cutoff, right? So coming to the gist of the story, which you want to actually ask, that what can be the possible safe score. I repeat, I'm saying a possible safe score, right? So considering the type of candidates which are appearing nowadays are of course more competent, वेल प्रिपेयर्ड। और दो जो वैरायटी होती है, एक +2 वाले, एक ड्रॉपर्स वाले। सो ड्रॉपर्स वाले भी काफ़ी बच्चे, इनफैक्ट कुछ बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, या जिन्होंने अप्लाई किया जोसा के लिए, आई नो मैनी ऑफ देम हु हैव रैंक अराउंड 6,000-7,000 JEE मीन्स दे हैव अटेम्प्टेड द पेपर, राइट। तो I feel that any score above 364 is good enough, right? So yesterday when one of the press reporter asked me, I also told him that yes, of course that was around 7:30 p.m., that yes, I feel that 362 364 is good enough. If you are beyond this, you will be safe. I didn't mean that कि no cutoff will be this, right? So of course cutoff will be below this. तो इसको आप ये लेकर ना चलें कि आपके 360 हैं तो आपका होगा कि नहीं होगा। आई एम नो वन टू से दैट, राइट। so only the results will be saying this, but I feel this will be the safe score, right? So I hope you all had a good exam, and those who didn't have or have some mistakes, I came to know about some candidate, एक बच्चा ने कहा कि वो अच्छा बच्चा था, he was actually suffering from fever or something, he was not able to attempt the paper in proper manner as expected। तो ये if and buts चलते रहते हैं, you should not be demoralized, you have done enough। what right now you are in class 12, so you should be well prepared for next time. That keeps on going even after qualifying written. Let's suppose somebody is eliminated on day 1 of SSB or day 5, he also feel demoralized, right? So आपका काम कोशिश करना है, you should keep trying, you should, आप अपनी तरफ से अच्छा दें, rest leave it to the wisdom, rest leave it to the destiny, all comes well is well, right? So that's all about all NDA paper. So summary in gist, 364 plus is definitely a safe score to be in the written list for NDA exam. You can put up on your comments, right? Of course, whatever you think. So based on my feedback along with the students as well as those appeared in Chandigarh region, I have placed up this video. So views may vary, it can be your personal views, my personal views, right? So every views has to be respected. So good luck, thank you, see you.